Shall we start now? Hello. Hello. Hope I am audible. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Hope everyone can hear me. Okay, my voice is clear to everyone, and you can see the screen, right? Yes, sir. Okay, so good morning and welcome to all. Okay, let me introduce myself in brief. Okay, I am Professor Dhananjay Shukla from Production Engineering Department. I am going to engineering mechanics for this particular semester one. Okay, I will not take entire portion. I will take some particular units. Okay, basically we will start today from unit number 1.2, which is about centroid. Okay, and then I will take the dynamic portion. Okay, so as we'll proceed, we'll see the subsequent discussions. Okay, so now without wasting our time, Sir, your voice let is us. echoing. Hello, hello. Yes, sir, your voice is not clear. It's echo. It's echo. Okay, just wait. Hello. Hello. Is it clear to you? Hello. Am I audible? Yes, sir, it's clear. स्क्रीन शेयर करता हूँ, दिखाई कि नहीं बोलो क्लियर, ठीक है? तो फिर मैं स्क्रीन दिख रहा है सबको? हाँ सर, दिख रहा है। सर. So, as I told you, today our discussion will be basically on unit number 1.2. I hope Neeta Gandhi madam has completed unit 1.1, that is about resultant, right? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो अभी आज ये टॉपिक समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा. दिस इज द सिंपलेस्ट टॉपिक फ्रॉम योर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का पूरा एंटायर जो टॉपिक है उसमें से, ठीक है? तो let me first tell you about this course. This engineering mechanics course code BJ19FEC104. Okay. Now we are taking 1.2 unit number 1.2. Okay. What will be the Can you speak louder? hello? Yeah, can you speak louder, sir? Okay, fine. Now am I audible? Hello. Yeah, Before sir. it was more audible. Yes, sir. अभी अभी ठीक है आवाज आ रहा है सबको क्लियर? हाँ
Yeah, अभी बना better. मैं. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So particularly outcome will be the demonstration of centroid and its significance. Okay, by locating the same. Uh, as per your curriculum, we have to cover the following topics. Okay, the concept of first moment of area, then how to find the centroid of composite plane laminas. Okay, basically plane laminas बोलेंगे तो क्या होता है? Plane laminas means the bodies which are actually like where we can neglect the thickness. Okay, thickness ना के बराबर हो जहाँ पे, ठीक है, we can neglect it and hence it can be treated as a planar bodies. Okay, so जैसे for example if you draw rectangle, if you draw triangle, okay, so these are what planar bodies. Here we can neglect the thickness, but if suppose you give the thickness to this rectangle, okay, like this and this, तो ये क्या बन जाता है आपका थ्री डायमेंशनल फिगर which is nothing but cuboid or cube. Okay, so this is the basically meaning of the plane laminas. Okay, this is clear to you first of all? Hello. Yes, sir. Yes. Clear. So we Yes, have sir. in our syllabus plane laminas and composite figure. Okay, composite means that is what by combining two or more planar figures. Okay, like अगर मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाया, इसके ऊपर ऐसा एक सेमी सर्कल दिखाया और फिर यहाँ से एक ट्रायंगल बनाया. Okay, whatever number of components I can include. Okay, so this becomes what composite because it has 1, 2 and 3 areas. Okay, तो बेसिकली जो प्लेनर लेमिनास होते हैं उनको डिफाइन करने के लिए और बेसिकली उनको रेफर करने के लिए या हम बोल सकते हैं उनको सिग्निफाई करने के लिए वी यूज द टर्म एरिया. ओके, so we can call here these are having a three areas. Therefore, it is not a single body. It is a composite body, and it is composite planar bodies or composite plane laminas. Okay, because thickness is what zero almost, or it is neglected almost. Clear to you? So this is what the first you should understand what we have in our curriculum. Okay, so centroid of a composite plane laminas we have, right? So all the formulas, all the relations, all the analysis which will be done will be with reference to this only. Okay, is it clear to you? Yes, sir. Yes. Yeah. तो जिसको भी कुछ दिक्कत रहेगा बीच में बोलो. ओके, मैं अभी बार बार बीच में बोलूंगा नहीं. ओके, इफ सपोज मेरा आवाज डिस्कनेक्ट होता है या वट एवर काइंड ऑफ डिफिकल्टीज यू विल फेस, तो मुझे लेट मी नो. ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट विद द सेंट्रोइड. ओके, तो मेरे को लगता है सेंट्रोइड आपके लिए नया नहीं होगा. यू ऑल मस्ट हैव अपने लोअर लेवल के सब्जेक्ट्स में कुछ तो जानकारी रखा होगा आपने. ओके, तो व्हाट इज एग्जैक्टली द सेंट्रोइड? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लियर वन पॉइंट. The most of the time the students confuses. Okay, because the centroid term is what is having its analogous term also, like center of mass. Okay, center of mass and center of gravity. ये आपने तीनों सुना है? सुना तो होगा ही ना? Yes, ऐसा sir. तो होगा नहीं सुना नहीं होगा. फिजिक्स तो पढ़ के आए हो आप लोग, ठीक है, तो आपने सुना तो होगा ही. चलो ठीक है, नहीं माना नहीं मालूम होगा तो भी सुना तो होगा. तो लेट मी फर्स्ट टेल यू this centroid, center of mass and center of gravity, these three things are completely different with each other. Okay, but in some cases we can say they are one and the same thing. तो कहाँ पे ये अलग होता है, कहाँ पे ये एक ही होता है? बिकॉज इन मोस्ट ऑफ द बुक्स यू विल फाइंड बहुत बार क्या होता है कि उसमें लिखा होता है कि सेंट्रॉइड, फाइंड सेंट्रॉइड, कहीं पे लिखा होता है फाइंड सेंटर ऑफ मास, फाइंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी. तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास अगर अलग है तो यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा हो? तो इट इज नॉट लाइक दैट. Centroid, center of mass, center of gravity are three different concepts. Okay, but in some cases they are one and the same thing. So what these cases
and in which case they will be same, we are going to discuss, okay, in subsequent slides. फटाफट देखेंगे, ठीक है, without wasting time. So let us first start with the centroid. Okay, we'll go one by one. Okay, so how we can define a centroid? Okay, first of all, what is the need of centroid? Okay, तो इट इज ऑफन, देखो अभी आपने प्रीवियस यूनिट पढ़ा होगा, वहां पे आपने क्या देखा होगा कि ये एक पॉइंट है, सपोज लेट अस कंसीडर दिस पॉइंट एंड लेट सपोज हियर देयर इज अ फोर्स p kilonewton, ओके, और लेट से यू हैव अनदर फोर्स, ओके, p1 p2 kilonewton, okay, let's say another force p3 kilonewton, okay, then I consider suppose another system here like this, ऐसा मैं कुछ force consider करता हूँ 3 kilonewton, okay, 5 kilonewton, 6 kilonewton, okay, this will be very relevant example but this will not be, तो let me tell you this example, okay, यहाँ पे क्या होगा, अगर आपका इसका रिजल्टेंट आपको बोलूंगा फाइंड आउट करने को तो आप आसानी से निकाल दोगे, ठीक है, इज इट, तो इसका रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, आप डायरेक्टली क्या करोगे, समेशन ऑफ एफ वी करोगे, ओके, दैट इज व्हाट 3 5 एंड 6, तो कितना आ जाएगा आपका, जो भी आएगा, ओके, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन फिगर, आई एम जस्ट इंटरेस्टेड इन कंसेप्ट, तो यहाँ पे सपोज कोई भी एक फिगर आया, रिजल्टेंट का वैल्यू फोर्स का आया, नाउ इफ यू फाइंड दिस रिजल्टेंट, ओके, तो ये रिजल्टेंट कौन से पॉइंट पे आप यहाँ पे लगाओगे, विच पॉइंट यू विल कंसीडर हियर to what locate this force, okay, so there should be some point, okay, it is often easier to define a point such that entire length or curve area, okay, or surface or volume or mass or gravitational force of a body should be representable to act at the point for some purposes, correct. Now what are the purposes, we'll not interested, we'll see later, but are you getting me, what is exactly the need, तो यहाँ पे ऐसा एक पॉइंट होना चाहिए जो ये पूरे फोर्स का एक इफेक्ट, नेट इफेक्ट और यू कैन से रिजल्टेंट इफेक्ट दिखाना चाहिए, और वो एक पॉइंट पे आना चाहिए, ठीक है, दैट पॉइंट इज ऑफन नेसेसरी, ओके, बिकॉज क्यों ऐसा है अभी मैं आगे बताऊंगा आपको, अगर ये ऐसा नहीं कंसिडर करेंगे एक पॉइंट तो क्या दिक्कत आएगी, आई विल टेल यू लेटर, ओके, तो आपको ये पता चला कि सेंट्रॉइड का पॉइंट का क्या है आपको नीड, सेंट्रॉइड इज अ पॉइंट व्हिच डिफाइंस बेसिकली द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, व्हाट इज एग्जैक्टली द ज्योमेट्रिकल सेंटर मीन, डू यू नो, हेलो, Midpoints का intersection है प्रेशर. let's say you have this circle, first of all let me tell you this is a two-dimensional figure, okay, but if I draw a sphere, this is not a two-dimensional figure, okay, तो वहाँ पे specifically लिखा होगा sphere है कि वो circle है, okay, तो circle के case में if I ask you to locate the geometrical center, what answer you will give me, Equal distances from all the points. यस, बट इट शुड बी जनरल ना, यहाँ पे सेंटर होगा, हमको सबको पता है कि इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर सर्कल होगा, ये सेंटर कैसे आता है, कोई भी दो डायमीटर ले लो और उसको इंटरसेक्ट कर दो तो आई विल गेट अ इंटरसेक्शन पॉइंट, दैट विल बी व्हाट ज्योमेट्रिकल सेंटर आई कैन से, राइट। सिमिलरली अगर रेक्टेंगल है तो इसका अपोजिट साइड्स का जो भी दो मिड पॉइंट्स है वो ज्वाइन कर दो और दो इक्वल लाइंस यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, दैट विल बी ज्योमेट्रिकल सेंटर, राइट। सिमिलरली आपका ट्रायंगल है, दिस ऑल यू हैव स्टडीड इन योर मैथमेटिक्स, तो यहाँ पे ये ट्रायंगल है, ओके, तो एनी ट्रायंगल, ओके, लेट्स से एनी ट्रायंगल, ओके, स्पेशल केस भी है ट्रायंगल का, वो देखेंगे बाद में। तो यहाँ पे कैसा हो जाएगा, यू विल कंसिडर दिस पॉइंट एंड यू विल ज्वाइन विद द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड, तो यहाँ पे एक ये लाइन मिलेगा, likewise similarly you will consider this vertex, okay, and you will connect this with the midpoint of this side, okay, similarly you can also do this, so you will find that कि ये तीनों एक ही पॉइंट पे जाके मिलते हैं and that point is what the geometrical center of this circle, okay। तो ये कहने का मतलब ये है कि ज्योमेट्रिकल सेंटर जो होता है, ठीक है, ज्योमेट्रिकल सेंटर जो होता है ऑब्जेक्ट का सेंटर पॉइंट लोकेट करता है, okay, and in some special cases this may be what varying depending on the conditions or depending on the positions of an object, okay, तो हर एक केस में वो डिफाइंड रहता है, ओके, अभी यहाँ पे मैंने सेंट्रॉइड टर्म यूज किया है इसलिए ज्योमेट्रिकल सेंटर बोला है, ठीक है, अदरवाइज वो वर्ड चेंज हो जाएगा।
तो मैथमेटिकली अगर हमको इस पॉइंट का सिग्निफिकेंस बताना है तो क्या होता है, ठीक है ना। ये मैंने आपको जो बताया कि ये एक पॉइंट लोकेट करना क्यों जरूरी है, इस पॉइंट का इनडायरेक्ट कनेक्शन है इस थर्ड पॉइंट से, ओके। तो मैथमेटिकली a geometrical center is that point about which the summation of the first moments of the elements of the body results is zero। अभी तक मैंने आपको फर्स्ट मोमेंट क्या होता है वो बताया नहीं, तो लेट अस फॉरगेट दिस पॉइंट, ओके। बाद में इस पे आएंगे, आप सिर्फ इसका सिग्निफिकेंस अभी के लिए पढ़ के ध्यान में रखो। व्हाट इज रिटन हियर, a geometric center is that point about which the summation of the first moment of the, let's say some first moment is m and summation of the first moment about this point, let's say this point is a, so summation about this point is what, of the entire body is zero। are you getting me? मोमेंट वगैरह आपको क्लियर होगा फर्स्ट यूनिट से, यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. हाँ सर। ओके। तो नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने आपको बताया वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया। अल्टरनेटिव इफ एन ओरिजिन इज चूजन आर्बिट्रेरी, मैंने बताया ना, डिपेंडिंग ऑन द पोजीशंस। पोजीशंस मींस लेट्स से यू हैव टू डिफाइन दिस पॉइंट, तो आपको कुछ रेफरेंस एक्सिस लगेगा, ठीक है। क्यों रेफरेंस एक्सिस लगेगा? सपोज आप जो है आर्बिट्रेरी कोई भी एक्सिस चूज करोगे तो बेस्ड ऑन दैट यू कैन टेल की व्हाट इज द पोजीशन ऑफ दैट। अगर मेरा रेफरेंस एक्सिस ये है तो यहाँ से मैं बताऊंगा, अगर मेरा रेफरेंस एक्सिस कुछ ऐसा है तो वो चेंज हो जाएगा पोजीशन, ठीक है। तो इन विच क्वाड्रेंट और इन विच रेफरेंस एक्सिस आई एम कंसिडरिंग, ओके, बेस्ड ऑन दैट द ज्योमेट्रिकल सेंटर विल बी देयर, ओके। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ एन ओरिजिन इज चूजन आर्बिट्रेरी then geometric center is that where the entire physical quantity may be assumed to be concentrated। ये तो रहने वाला है, हमेशा याद रखो। this is universal truth definition for the centroid, center of mass, center of gravity, whatever there is, okay। that's why in general it is written entire physical quantity, that may be area, that may be weight, that may be mass, that's why this physical quantity may be anything but it will be assumed to be concentrated, okay। ओके अभी देखो यहाँ पे पर्पस भी लिख दिया है, फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग मोमेंट अबाउट द ओरिजिन, ओके। ये आगे बताता हूँ, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। geometrical center of simple geometric shapes like circle, rectangle, triangle are well known, okay, right। अभी मैंने डिस्कस किया। now what is actually the centroid mean as a first moment of area, okay। why it is referred as a first moment of area, let me tell you first कि मोमेंट होता क्या है। अच्छा, मोमेंट आपको पता होगा, आई थिंक आपने यूनिट 1.1 कवर किया है। व्हाट इज एग्जैक्टली द मोमेंट? हेलो, Force into distance. या फोर्स, Perpendicular. फोर्स इनटू द डिस्टेंस, करेक्ट, सबको पता है ये। अगर सपोज यहाँ पे एक फोर्स लगाया मैंने, ओके, ये पॉइंट है। फोर्स को डिफाइन करने के लिए आपको पता है मैग्नीट्यूड, डायरेक्शंस और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, तीन चीजें चाहिए आपको, ठीक है। तो दिस इज फाई, दिस इज मैग्नीट्यूड, दिस इज डायरेक्शन एंड दिस इज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ए। लेट्स से दिस इज अ 5 मीटर, ओके, एंड आई वांट टू फाइंड मोमेंट अबाउट बी। तो मोमेंट अबाउट बी, हाउ आई कैन फाइंड? आई नीड द फोर्स, okay, into perpendicular distance, this is what moment arm, it is called a moment arm, this is d, okay। so moment arm is d here, that will be 5 into 5, this is 25। now since here I have considered the first order distance here, or the first time distance only, okay, one time distance only, that's why it is a first moment। अगर मैंने इसको फिर से सपोज एफ डी इंटू डी किया तो दिस इज सेकेंड मोमेंट, एंड विच इज द केस अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओके। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने पढ़ा होगा, उसमें क्या लिखते थे आप? एम आर स्क्वायर, करेक्ट। आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर और एम आर स्क्वायर लिखते थे ना। वहाँ पे दिस इज व्हाट, दिस इज रिप्रेजेंटिंग, एम के स्क्वायर इज रिप्रेजेंटिंग सेकेंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बट we have we do not have to consider moment of inertia। सेंट्रॉइड से हमको चलना है पकड़ के। सेंट्रॉइड में अब देखते हैं फर्स्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे है, फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया कैसे है। अच्छा, एक चीज मैं क्लियर कर दूं, सेंट्रॉइड है तो एरिया ही आएगा, ओके। सेंट्रॉइड है तो एरिया ही आएगा, सेंट्रॉइड जहाँ पे है वहां पे वर्ड एरिया ही आएगा, ओके। तो फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया इट इज। तो since we know that what is the need actually, okay, what is the need of first moment of area की तरह से इसको डिफाइन करने का नीड क्या था? तो नीड ये था कि we know that not all the shapes in the world are as simple as they are expected, like circle, rectangle and triangle।
So ऐसा हो गया कि how exactly do we find the center of any shape or any area which is given to us. So for that we have a different approach, and which is approach of first moment of inertia, first moment of area. So let's understand what is and how to find the moment of inertia for what irregular shapes. Okay, so let's say you have this and this irregular body. Okay, any irregular body which is kept in the first quadrant, let's say here xy. Okay, and this is origin. Okay, and now I'm assuming that the centroid of this entire body, okay, means centroid means what, the related to area. Okay, so I can say this is two-dimensional figure first of all. Okay, and this is I'm considering planar figure. Okay, lamina you can call. So since I am defining it as a lamina, so therefore I can call the iska area, let's say A. Okay, and now I'm assuming that the entire area is supposed to act at this point G. Okay, what is G? G is here. I am assuming that it is a centroid. Okay, so just it is my assumption. Okay, I am assuming that the centroid of this particular irregular shape जो body है इसका जो centroid है it is here. Okay, are you getting me? तो इसका जो distance है, this is what x bar from y axis and this is y bar from x axis. Let's say okay. तो g का coordinate क्या है? Let's say x bar and y. I'm assuming that the centroid is at a distance of x bar and y bar. Okay. Now my objective is to find this x bar and y bar. Okay. Is it clear to you? Question समझ में आया आपको? Yes, sir. Now, Yes, sir. what will be the approach which is used here to find this G, or you can say X bar, Y bar. तो approach is like this. यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये जो irregular lamina है मेरा, I will divide it into a number of sub laminas or small laminas. Okay, let's say ये जो body है, ये number of bodies से मिलके बना हो. ये total area अगर A है, तो अगर मैं इसको कंपोज ऐसा बोलूँ कि इसको डिवाइड करो, तो नंबर ऑफ स्मॉल एरियाज विल बी देयर लाइक डेल्टा A1 इफ आई एम अज्यूमिंग दैट डेल्टा वर्ड. ओके, डेल्टा मींस वेरी स्मॉल, डेल्टा A2, डेल्टा A3. ओके, so in general I can write delta AI. Okay, let's say ith number of elements it is made up of. Okay, so let us say one of the element which is I am assuming small element, that is delta AI, which is at a distance of xi from y-axis and yi from x-axis. My reference axes are these, na? So I can mark the distances. Okay, this is very common. We all know. Okay, how to mark the distances from the reference axis. So now अगर ये है मेरे पास दोनों informations, ऐसे ही यहाँ पे AI मैंने कंसिडर किया, ऐसे यहाँ पे डेल्टा A2 कहीं पे भी होगा, ऐसे डेल्टा A3 कहीं पे भी होगा, डेल्टा A4 कहीं पे होगा. ओके, तो आई कैन लोकेट ऑल दिस. ओके, लाइक ये x3 हो जाएगा, फिर यहाँ से ये y3 हो जाएगा, अगर A2 है तो ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, फिर ये x4 हो जाएगा, ये y4 हो जाएगा. लाइकवाइज नंबर ऑफ बॉडीज विल बी. ओके, नाउ एक बार ये पता चल गया, तो व्हाट आई कैन अप्लाई हियर इज आई विल अप्लाई वन प्रिंसिपल हियर. ओके, एंड दैट प्रिंसिपल विल बी लाइक दिस. देखो क्या होगा अभी, एक मिनट, just a moment, let me vacant this space. अच्छा ठीक है, जाने दो. Now what I will apply, can you see ना, ये दिख रहा है ना आपको जो ब्लैक में है अभी यहाँ पे लिखा हुआ. See this, read, moment of the complete area about y-axis will be equal to the sum of the moments of all the small areas about y-axis. Again I am repeating it. Okay, moment of the complete area. What is complete area? Complete area is what? A. Correct? Clear to you? And moment of this complete area. Moment means अभी आपने बताया what? अगर मोमेंट देना है फोर्स का तो फोर्स इंटू डिस्टेंस, मोमेंट देना है एरिया का तो विल बी एरिया इंटू डिस्टेंस, अगर मोमेंट देना है वेट का तो वेट इंटू डिस्टेंस, अगर मोमेंट देना है मास का तो मास इंटू डिस्टेंस. राइट? So it is called as first moment of force, it is called as first moment of area, it is called as first moment of weight, it is called as first moment of mass. Similarly, okay, you have this here. तो फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया इट इज एक्चुअली बाय डिफॉल्ट मोमेंट दिखा तो वो फर्स्ट मोमेंट होता है, अगर सेकंड मोमेंट रहेगा तो सेकंड वर्ड आता है लिख के. ठीक है,
Is it clear to you? So complete area means what? A, right? And about y-axis. About y-axis means इसके ये वाला axis के about. This is my reference axis. So I will consider the distance from the y, right? Hello. Am I clear to you? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो from y-axis, what is the distance of this complete area? ये समझ में आ रहा है ना आपको? ये पूरा एरिया का मोमेंट देना है about y-axis. तो this will be I know this is what AI, correct? अभी मैंने यहाँ पे लिखा था ना, कहाँ पे गया? हाँ, यहाँ पे लिखा था AI, ठीक है, नहीं लिखा था तो AI, okay? AI and what is the distance of this? ये पूरा सेंट्रॉइड हाँ ये देखो ये रहा ए, ठीक है, और इसका डिस्टेंस क्या है x बार फ्रॉम y एक्सिस. आई एम टेकिंग मोमेंट अबाउट y ना, तो अगर मोमेंट अबाउट y दे रहा हूँ तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस x बार हो जाएगा, तो इट विल बी x बार. Okay, and what I am saying, this will be equal to the sum of the moments of all the small areas about y-axis. So that will be equal to the sum of the moments of all the small areas. All the small areas मुझे पता नहीं है कितने number of areas है, but I know कि मोमेंट कैसे निकालना है, ठीक है. तो अभी मेरे पास तो पता नहीं है कितने हैं, तो सम ऑफ वर्ड आ गया. तो मैं दो तरीके से लिख सकता हूँ. एक तो देखो ऐसे कि जितने भी एरियाज है उनको ऐड करके, तो लेट्स से पहले मैं डेल्टा A1 कंसिडर करता हूँ, ठीक है. डेल्टा A1 सपोज यहाँ पे है ये वाले डिस्टेंस पे, तो ये x1 पे है और ये y1 पे है, तो मेरे को y एक्सिस से देना है, तो डेल्टा A1 into x1 I can write first moment. Similarly I will add the second वाला डेल्टा A2 into x2 plus delta A3 into x3, and similarly I can write delta AI and xi, ठीक है, अप टू ith नंबर. तो ये सारे जो छोटे छोटे एरियाज का फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया होगा अबाउट वाई एक्सिस, अगर वो निकाल के मैं ऐड करूंगा सम, ओके, सम को हम मैथमेटिकली ऐसे भी दिखाते हैं, तो दैट कैन बी रिटन लाइक दिस, ओके. तो i is equal to 1 to n, okay, ai. Now if I have written summation, I can remove this delta sign also, okay, and if you want to write no matter, you can write ai into xi, ठीक है. तो ये जो होगा ये दोनों चीज इक्वल होगा, दैट इज व्हाट एग्जैक्टली द स्टेटमेंट का मीनिंग है, ठीक है. एंड हियर इट इज रिटन. आर यू गेटिंग मी? Yeah. So this is what how we define the centroid as a first moment of area. And now I hope you understood why centroid is a first moment of area. Okay, तो फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया मतलब यही होता है कि एरिया का moment about the particular axis. And now similarly you can find out the यहाँ पे moment about x axis. तो moment about x axis लोगे तो क्या चेंज हो जाएगा बताओ? एरिया का ये पूरा moment about x axis, tell me. तो ये पूरा एरिया हुआ इसका मोमेंट अबाउट एक्स एक्सिस, व्हाट विल बी द? Yes, right. So a into y bar, and here it will be summation I is equal to 1 to n. This will be ai into yi, right? Now see, it is very easy to find now x bar and y bar because I have what the equations. ठीक है, तो यहाँ पे एक क्लियर करता हूँ, एक मिनट. So from this equation, equation number 1, see यहाँ पे I can have x bar, ठीक है, ये x bar का वैल्यू हो जाएगा यहाँ से. So using this x bar का equation, okay, and similarly you will have y bar. Similarly you will have a y bar. एक मिनट, दिख रहा है ना? हाँ सर. हाँ, आप चाहिए तो नोट करते चलो बुक में, ठीक है. So these two equations I can use to find the centroid of any irregular shape. ठीक है, फॉर्मूला क्लियर हो गया? दिस इज व्हाट द फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया. ओके, नाउ इसमें भी एक अभी ट्विस्ट है. सी, अभी यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, अभी समझो. फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने क्या बोला कि दिस पर्टिकुलर ये इरेगुलर शेप है, ठीक है, ठीक है, बट ये इरेगुलर शेप इस तरीके से है
कि इट इज जनरल लाइक मैं इसको ऐसा बोलता हूँ कि इट इज इरेगुलर शेप, बट ये ऐसा है कुछ कि इसको हम एक स्पेसिफिक एरिया में डिवाइड कर सकते हैं, ऐसा है कुछ। ठीक है, इसमें दो पॉसिबिलिटी है। पहला कि ऐसा है कि इसको एक अभी समझो मैंने आपको ऐसा कुछ दे दिया यहाँ पे, ऐसा ऐसा, ठीक है, ऐसा ऐसा, ओके। तो ये इरेगुलर शेप है, एग्रीड, ठीक है। बट इसको क्या है, मैं स्पेसिफिक एरियाज में डिवाइड कर सकता हूँ। दिस इज ट्रायंगल, दिस इज रेक्टेंगल, दिस इज semicircle, and then I can find out the what this AI XI whatever जो भी है, ठीक है, वो प्रॉब्लम करते हुए देखेंगे। एंड देन आई कैन फाइंड द टोटल एरिया, ये सब जो भी पैरामीटर फाइंड आउट कर सकता हूँ, फिर इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ और मैं डाल के वैल्यू निकाल सकता हूँ। इज इट क्लियर टू यू? बट माय क्वेश्चन इज दैट इफ सपोज द इरेगुलर एरिया इज नॉट लाइक दिस, कि यहाँ पे मेरा ऐसा कुछ हो, लेट्स से ये मेरा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है और मेरा इरेगुलर एरिया ऐसा कुछ हो लाइक पैराबोला, या ऐसा कुछ हो लाइक एलिप्स, और कुछ ऐसा हो लाइक हाइपरबोला, ठीक है, फॉर एग्जांपल एनीथिंग, ओके, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग इरेगुलर शेप सच दैट कि इट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू स्पेसिफिक एरियाज। देन व्हाट टू डू, हाउ टू फाइंड द first moment of area? Of course the approach will be same, first moment of area तो find करना ही पड़ेगा, because it is the most true definition for centroid. Centroid is nothing but first moment of area. तो of course मुझे उसी से जाना पड़ेगा, but how to find the first moment of area then? Question is that. Are you getting? Sir, assume the small areas to be very, very small. And Yes. summation का integration use कर लो. Yeah, correct. Very much correct. So see, when the areas will be like this कि हम उसको specific areas में नहीं divide कर सकते, okay, so what we have to do, we have to use an integration approach, and that is sometimes also called first principle for centroid, okay. Let's say यहाँ पे figure देखो बनाया है, this is a irregular shape where we cannot divide it into a specific areas. So in that case what we do, if we divide it into a infinitesimally small areas, let's say one of those areas is DA, this is DA देखो यहाँ पे locate किया हुआ है, let's say this is at x bar and this is y bar, okay. Sorry, not this x bar, x bar we have used for the centroid for entire area, okay. So this is, let's say, x and this is y, okay. तो पूरा एरिया का जो सेंट्रोइड है वो लेट्स से यहाँ पे x बार और y बार पे है, तो x बार और y बार अगेन वी हैव टू फाइंड। तो हियर व्हाट वी हैव टू डू, ये जैसे कि स्मॉल एरियाज है वैसे ही बहुत सारे एरियाज यहाँ पे और होंगे, डी ए ऐसे, ठीक है। तो इन दैट केस मुझे ये तो पता है डी ए बहुत सारे होंगे, बट स्पेसिफिक उनका एरियाज नहीं पता है, ठीक है। वो कुछ भी हो सकता है ना, कैसा भी आड़ा टेढ़ा कैसा भी हो सकता है बॉडीज, ओके, एनी रैंडम फिगर्स। तो मैं एरिया उसका निकाल नहीं सकता हूँ, तो फॉर दैट आई यूज सिंपल एक्सप्रेशन ऑफ मैथमेटिक्स, दैट इज इंटीग्रेशन। तो डीए का मुझे एरिया मिल जाएगा, ठीक है। और फर्स्ट मोमेंट निकालना है, एज फ्रॉम डेफिनेशन वी हैव एक्स बार इज व्हाट, एक्स बार एंड वाई बार इज फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया। तो फर्स्ट मोमेंट ऑफ इस एरिया का क्या हो जाएगा, डीए का, which will be nothing but dA है, तो इसका मोमेंट अबाउट y axis will be dA into x, so that is x dA I can write, and divided by total area, that is integration of dA. Similarly y bar निकालने के लिए मोमेंट आई विल टेक अबाउट व्हाट, x axis, तो x axis के अबाउट मोमेंट दूंगा इसका dA का, तो दिस विल बी y, but perpendicular distance is y into dA, so that will be y into dA divided by total area dA, right? This is y bar and this is x bar, which is the same written over. Okay, clear है? ठीक है, हेलो, Yes, sir. Yes, sir. ओके फाइन। तो अभी यहाँ तक आई होप आपको सेंट्रोइड का बारे में पता चल गया, सेंट्रोइड क्या होता है एग्जैक्टली, और सेंट्रोइड को फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया क्यों बोलते हैं। नाउ it is a time where we can now compare these three terms, centroid versus center of mass versus center of gravity। अब जो है टाइम आ गया, हमने जो क्वेश्चन स्टार्टिंग में रेज किया था, व्हाट वाज दैट क्वेश्चन, कि सेंट्रोइड, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग होते हैं या सेम होते हैं।
ठीक है, वो एग्जैक्ट हमको यहाँ पे पूरा क्लियर करना है। सी ये जो है सेंट्रोइड सेंटर ऑफ मास का ये डेफिनेशन क्या बोलता है तो देख लेते हैं। सेंट्रोइड तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। सेंटर ऑफ मास इज व्हाट? Center of mass is a point where the mass of the body can be assumed to be concentrated. Okay, similarly, जैसे वहाँ पे क्या था सेंट्रोइड में? Centroid is a point where the area, so a whole area of the body can be assumed to be concentrated. तो वैसे यहाँ पे whole mass of the body can be assumed. Okay, and that point can be referred as mass center also. Okay, जैसे वहाँ पे geometrical center भी, जैसे यहाँ पे mass center. The mathematical expression for this is what? This x bar is equal to I is equal to 1 to I is equal to n mi xi upon m. M is a total mass. Similarly, y bar is I is equal to 1 to I is equal to n mi yi m. First moment of mass. Okay. Clear है? ये पता ही होगा ना? हेलो. Yes, sir. हाँ. हाँ आपको मैं ये एक्सप्रेशन थोड़ा सा मुझे यहाँ पे एलोबरेट करना पड़ेगा। अभी अगर मुझे सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ रिलेशन निकालना है क्या है तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा स्पेसिफिकली एलोबरेट करना पड़ेगा। वी ऑल नो व्हाट इज डेंसिटी। व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी इज व्हाट? मास अपॉन वॉल्यूम, करेक्ट? लेट्स से m is what? Mass, and v is what? Volume. Now from here I can write mass as density into volume. Is it clear to you? This volume I can write again as what? This volume I can write in terms of area and thickness. Can I write? Hello. अगर कोई फिगर दिया हुआ है, Yes, sir. यस, अगर कोई फिगर 3 डायमेंशन दिया हुआ है तो उसका वॉल्यूम निकालना बहुत आसान हो जाता है अगर एरिया और थिकनेस पता हो। लेट्स से एरिया इज a, thickness is t, right? And now let's say, assume here the thickness is, I will make one assumption, thickness is uniform. Thickness is uniform means constant, not varying. Okay, जो है वो है थ्रू आउट, चेंज नहीं हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, तो टी इज यहाँ पे मैं यूनिफॉर्म एज्यूम कर देता हूँ, और यूनिफॉर्म में मैं सपोज, यूनिफॉर्म मीन्स कोई भी वैल्यू हो सकता है, ठीक है, बट इट विल बी यूनिफॉर्म, चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे सिंप्लिसिटी के लिए मैं एज्यूम कर देता हूँ 1 mm, मतलब वो टी का टर्म चला जाएगा इसलिए कंसिडर। तो इट विल बिकम रो इनटू एरिया, करेक्ट? ठीक है, मास विल बी रो इनटू एरिया, राइट ना? हेलो, यू ऑल्सो नो दैट कि डेंसिटी भी क्या होता है, नॉर्मली कांस्टेंट ही रहता है ना। सपोज अभी यहाँ पे मैं ये सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो व्हाट इट विल बिकम, अगर इसको एक्सपांड करोगे तो इसको ऐसे लिख सकते हो ना, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस सो ऑन mn xn अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस सो ऑन, राइट? और यहाँ पे अगर m का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, रो1 a1 x1 प्लस रो2 a2 x2 प्लस रो3 a3 x3, okay, plus so on, rho n a n x n divided by rho1 a1 plus rho2 a2 plus rho3 a3 plus so on plus rho n a n, करेक्ट? ठीक है, तो ये इतना बड़ा लिखने से अच्छा यही मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, बट अभी ये समझाने के लिए मैं ये एक्सपांड करता हूँ, ठीक है? आर यू गेटिंग मी Yes, sir. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? तो यस, अगर मैं नॉर्मली मेरा बॉडी है, अगर सपोज ये कोई तो बॉडी है, इसका मुझे फाइंड आउट करना है सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ सेंट्रोइड, सेंट्रोइड और सेंटर ऑफ मास, ठीक है, फाइंड आउट करना है, ठीक है? और समझो ये बॉडी एक ही इससे बना है, एक ही मटेरियल, सपोज स्टील का है वो, ठीक है, स्टील है,
तो इस केस में क्या होगा, अगर एक ही मटेरियल से बना हुआ है तो इसका डेंसिटी थ्रू आउट कॉन्स्टेंट ही रहने वाला है ना, बिकॉज बॉडी तो चेंज नहीं हो रहा है, उसका मटेरियल तो चेंज नहीं हो रहा है ना, ये अभी कुछ देर पहले स्टील था बाद में जाके ब्रास का हो जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो डेंसिटी विल रिमेन सेम थ्रू आउट। तो रो वन रो टू रो थ्री सब सेम हो जाएगा, तो ये नीचे का टर्म सब कैंसिल हो जाएगा, राइट ना। तो मुझे फॉर्मूला क्या मिल जाएगा यहाँ से, सी, यही फॉर्मूला मुझे क्या मिल जाएगा, एक्स बार इज इक्वल टू a1 x1 plus a2 x2 plus a3 x3 to so on an xn upon a1 plus a2 plus a3 and to an, right? And now you can see it is what, same to that centroid wala form. ये first moment of क्या आ गया, area. Are you getting me? Hello. हाँ सर. So what conclusion I am getting from here, what I can conclude here, if the body is made of single material, that means if there is a homogeneous body, there is a homogeneous body that is made of single material, where density is constant, the centroid and center of mass will be same. That is written here. If density of the body is same at every point, the centroid and center of mass will be the same. Correct? तो आपको समझ में आया सेंट्रॉइड और सेंटर ऑफ मास में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, और कब ये सेम हो, इस केस में Yes, sir. ये जब आपका डेंसिटी जो है बॉडी का सेम रहेगा थ्रू आउट और थिकनेस यूनिफॉर्म रहेगी, ठीक है। तो ये दो चीजें एसेंशियल कंडीशंस है इसके लिए। देन यू कैन से द सेंटर्ड एंड सेंटर ऑफ मास, okay, as you can see in this example, this plate, suppose this plate is having uniform thickness and it is made up of steel, okay, so here the center of mass and center of centroid will be same, okay, let's say यहाँ पे कहीं पे भी होगा बट वो सेम होगा, okay। बट सपोज अगर मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ जहाँ पे एक मटेरियल है जो दो चीज़ों से बना, दो मटेरियल्स, ठीक है, वन इज लेट्स से स्टील एंड अनदर इज व्हाट, लेट्स से वुड, लेट्स से यहाँ पे एक ही ऐसा एक मटेरियल है, ये आधा जो है यहाँ पे ये स्टील का है और यहाँ पे ये वुड का है। तो हियर what will be the center of mass and what will be the center, will it be same? No. Different. सेंटर्ड कहाँ पे होगा इसका, सेंटर्ड कहाँ पे होगा, Geometric center. yes, centroid will be always at the center, geometric center, irrespective of the case, because centroid का definition ही है, it is a geometric center. But what about center of mass? स्टील के वाले स्टील के साइड ज्यादा होगा। Center of mass देखो यहाँ पे अभी डेंसिटी अगर अलग अलग है तो it is what, it will depend on density. तो जो ज़्यादा whichever will be having more density, that means heavier, center of mass will be shifted towards that body, okay, so it will be shifted towards steel, तो यहाँ पे कहीं पे इसके आसपास होगा, ठीक है। बट इतना क्लियर है कि सेंट्रोइड और सेंटर ऑफ मास सेम नहीं होगा, ओके, दैट इज व्हाट आई वांटेड टू कन्वे, ओके। So I hope you understood. Yes. Okay. Now let's consider the center of gravity and what is the relation, find out. एक मिनट ना, ये रब करने दो। ठीक है, we will see that बाद में, वो बाद में करेंगे। The center of gravity is what? Center of gravity is an imaginary point where the weight of the body can be assumed to be concentrated, right? अभी पहला केस क्या था, सेंटर, यहाँ पे एरिया वाज assumed to be concentrated, center of mass were supposed to be concentrated at the one point. Now the center of gravity देखो वर्ड में ही gravity आया, gravity means related to gravity, this means weight, तो यहाँ पे क्या होगा, gravity means it is an imaginary point where the weight of the body can be assumed. तो हम सबका एक वेट होता है, ठीक है, हम सब एक बॉडी है, हमारा एक सेंट्रोइड होता है, ठीक है, यहाँ पे हमारा सारा वेट जो है सपोज टू बी
कॉन्सेंट्रेटेड। ओके, ऐसा एक मान के चलेगा। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होगा इसका, x bar is equal to I is equal to 1 to I is equal to n w I x I upon w. Okay, w is a weight. Now we all know that weight is what gravitational force acting on the body, that is given by m into g. Okay, mass time acceleration due to gravity. Okay, that means we can say here the weight purely depends on the gravitational constant, acceleration due to gravity, okay, not gravitation. मास मास तो कांस्टेंट रहने वाला है, मास चेंज होने वाला है क्या, हेलो, मास चेंज होने वाला है, नो, No, sir. कांस्टेंट है। इज प्योरली डिपेंडिंग ऑन जी, राइट। तो W तभी बदलेगा जब G बदलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर सपोज मैं क्या करता हूँ, अगर मैंने सपोज G को ही चेंज नहीं किया, G कांस्टेंट एज्यूम कर लिया, ठीक है, क्या किया मैंने, G कांस्टेंट एज्यूम कर लिया, और G कांस्टेंट कहाँ हो सकता है, कैन यू टेल मी, हेलो, can you give me any example where G can be treated as a constant? अगर सारा मेजरमेंट अर्थ पे या फिर कोई भी एक प्लैनेट पे किया हो एक ही जगह। यस, तो अभी जैसे देखो मैं एक जनरल में बताता हूँ आपको, ठीक है। जैसे आपने सपोज एक बहुत बड़ा बॉडी कंसिडर किया, सपोज लार्ज बॉडी एकदम, ठीक है, और एक बहुत ही स्मॉल है, बहुत ही स्मॉल है, हम सब जो है स्मॉल बॉडी, ठीक है, हमारे लिए, मैं पहले लार्ज बॉडी का बताता हूँ, ठीक है। लेट्स से यू हैव, हाँ, लेट्स से यू हैव अ माउंटेन्स, ओके, कोई भी समझो, एक समझो माउंट एवरेस्ट है, तो उसका हाइट सबको पता रहेगा, ठीक है, कितना है। तो माउंट एवरेस्ट के केस में क्या होगा, उसका जो बेस पॉइंट है और उसका जो पीक पॉइंट है, दोनों में काफी अंतर है, ठीक है। इसका बेस पॉइंट विल बी नियर द अर्थ, विल बी नियर द अर्थ। तो नियर द अर्थ है मीन्स जी का वैल्यू अराउंड 9.8 पॉइंट समथिंग समथिंग रहेगा। बट यहाँ पे पीक पॉइंट है, पीक पॉइंट पे जाते जाते उसका वैल्यू कुछ तो चेंज होगा, 9.7 5 कुछ ऐसा रैंडम एक वैल्यू बता, कुछ तो कम होगा ना, कम होगा कि नहीं, हेलो, विच इज द नियरेस्ट हैव अ हायर वैल्यू एंड विच विल बी फार विल हैव दिस वैल्यू ना। तो यहाँ पे क्या होगा, लार्ज बॉडी के केस में जी जो है विल नॉट रिमेन कांस्टेंट, इट विल चेंज। बट स्मॉलर बॉडी के केस में, लाइक हम सब जो हैं, वी आर ऑलवेज नियर द अर्थ, वी आर लिविंग ऑन द अर्थ, तो दिस विल बी ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है। तो वो बॉडीज जहाँ पे जी कांस्टेंट रहता है, मीन्स हम क्या बोल सकते हैं, स्मॉल बॉडीज, वहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, दिस विल बी, फॉर्मूले के अंदर अगर डालोगे तो एम जी एक्स आई हो जाएगा, है ना, ठीक है, एम आई जी आई एक्स हो जाएगा ना, और जी कांस्टेंट है, ठीक है, एम आई जी आई, जी कांस्टेंट है तो कैंसिल हो जाएगा, दैट विल बी एम आई एक्स आई अपॉन एम, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यू सब्स्टिट्यूट इन दिस फॉर्मूला, हेलो, कैन यू Yes. डू दिस एज अ एक्सरसाइज, अभी मैं वो पूरा करके नहीं बता रहा हूँ, ये आप एक्सरसाइज के तौर पे करो, ठीक है। मैं आपको फाइनल आउटकम रिजल्ट बता रहा हूँ क्या आएगा। If you do that, if you substitute, you will find that this will exactly result the formula which is written over here, that is for center of mass. तो इसका मतलब for smaller bodies, okay, for smaller bodies, the center of mass, okay, for smaller bodies, the center of mass and center of gravity almost remains same, okay. So because center of mass and center of gravities, okay, are equal for smaller bodies, and in general, in our case we are normally going to consider smaller bodies only, na? Smaller bodies which are on the earth's surface only we are going to consider for our analysis, we are not going to consider the bodies which are very large. That's why in our case we can say the center of mass, center of gravity and center all are same. Are you getting me? समझ में आ गया आपको कि सेंट्रोइड, सेंटर ऑफ हाँ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कब सेम होता है और कब अलग होता है, समझ में आया? तो सेंट्रोइड एंड सेंटर ऑफ मास विल बी सेम if the density of the material and
is having a constant thickness, uniform thickness. Center of mass and center of gravity will be same if we consider the smaller bodies. Okay, and all will be same if we are considering the homogeneous body with smaller bodies which is having a homogeneous property. Okay, so this you have to remember. Okay, clear? So this is what the centroid versus center of mass versus center of gravity. So that is what written over here. For the smaller bodies, G is constant, center of mass and center of gravity is same. यहाँ तक क्लियर हो गया पिक्चर सबको? अभी तक कुछ डाउट है तो पूछ. हेलो. Yes, sir, no doubt. ओके. नाउ नेक्स्ट. अभी हम वापस अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं जो हमने स्टार्टिंग में फिर से रेज किया था. क्वेश्चन नंबर 2 कि व्हाई डू वी नीड टू लोकेट द सेंट्रॉइड. तो मैंने ये सब तो पहले ही बता दिया, ये सब अभी डिस्कस करना नहीं है कि डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स के केस में हमें ज़रूरत पड़ता है ना. मैंने बताया था ना डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स अभी ऐसा है यहाँ पे देखिए. सिर्फ ये नहीं बताया था कि ये पॉइंट हमें लगता क्यों है. ठीक है, तो अभी उसका आंसर यू विल फाइंड हियर. Now in case of the distributed force as shown in here, figure number 3, okay, figure number 3, one cannot find the moment because every force is at a different distance and there are infinite forces. अभी इसका ही एग्जांपल है. यहाँ पे हर एक फोर्स देखो, एक अगर ये मैं कंसीडर करूँ तो यहाँ से ये अलग डिस्टेंस पे है, फिर यहाँ से ये वाला अलग डिस्टेंस पे है, यहाँ से ये अलग. इस केस में आप मोमेंट यू कैन नॉट फाइंड एग्जैक्ट मोमेंट. Okay, so therefore, in order to replace this distributed force with a single force, तो इसको हमको एक single force से replace करना पड़ेगा, so that वो force जो है इसका पूरा resultant effect दिखाएगा. मतलब अगर ये पूरा force consider करो या एक ये single अकेला force consider करो, that will be the same. But ये single force consider किया तो उसको कहीं पे तो रखना पड़ेगा. That has to be put somewhere. तो point is needed. That is what centroid. And then once we found this point, we can measure the distance from the point where we need to find the moment. Suppose यहाँ पे moment find out करना है तो m about o will be what? Simply it will be equal to the single force into the distance from that point to the center of gravity, that is d. Okay, so whenever we need to take the moment of this distributed force, take the distance from the centroid, and thus the position of centroid is important to locate. क्लियर है? हेलो, ठीक है. आंसर मिला सेकंड क्वेश्चन का. So till now we have covered what is centroid, what is why it is needed, okay, and what exactly the meaning of center of gravity, centroid, and center of mass, when they can when they are same and when they are different. Okay. Now coming to the next point. While going to analysis part, okay, while going to solve the problems, there are some points which you need to remember, okay, regarding centroid. Okay, what are those points? Let's see. The first point which I already defined is centroid is a geometrical center of a figure irrespective of the any case. Okay, always centroid is the geometrical center of a figure, but geometrical center may vary, okay, depending on the position and reference axis. Okay, तो वो आपको ध्यान रखना है. तो जो भी सेंट्रोइड आप निकालोगे वो ज्योमेट्रिकल सेंटर दिखाएगा फिगर का. ठीक है. For a symmetrical figure, centroid lies on the axis of symmetry. Now, what is axis of symmetry? Let's say this you have a rectangle, okay, and if I draw a line, center line exactly like this, तो ये इसको क्या करता है? दो इक्वल वर्टिकल हाफ में डिवाइड करता है. ओके, एक्सिस ऑफ सिमेट्री वो लाइन होता है जो फिगर को एग्जैक्टली दो हाफ में डिवाइड करता है, which exactly divide the figure into two equal halves. Okay, equal halves. Okay, so that is what referred as a AOS, that is axis of symmetry. We, as in this figure you can see this AOS 1, this axis of symmetry 1. Okay, or you can say y axis. Here the axis of symmetry is what? Y axis. So this exactly divided into a two exact vertical line. Similarly, I can have axis of symmetry like this also. Okay, x axis of symmetry. Okay, which equally divide this into two horizontal halves. Right? You are getting me?
तो अगर सिमेट्रिकल फिगर है तो उसका सेंट्रोइड हमेशा किस पे होगा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे ही होगा। ओके, अभी एक्सिस ऑफ सिमेट्री एक से ज्यादा भी हो सकता है इसका। तो अगर फिगर इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, सी दिस इज व्हाट एक्स एक्सिस, this is what x axis. तो if figure is symmetric about x axis like this, इसके axis के about symmetric है, तो then y coordinate of CG will be 0. Of course correct है ना, it is very basic thing. अगर ये फिगर है और ये सिमेट्रिक है अबाउट y एक्सिस, सॉरी x एक्सिस, तो अगर मैंने ये ऐसा पकड़ा ओरिजिन, सॉरी ये ओरिजिन पकड़ा है, समझ में आ रहा है ना आपको, तो ये आपका सिमेट्रिक है अगर, तो आपका जो है वाई डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बिकॉज दिस इज योर एक्स ना, तो एक्स से ही आप वाई मेजर करते हो ना, तो वाई विल बी व्हाट, 0. आर यू गेटिंग मी, बिकॉज सेंट्रोइड विल लाई ऑन दिस एक्सिस, Yes, sir. तो सेंट्रोइड विल लाई ऑन दिस एक्स एक्सिस, तो जी विल बी हियर। सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा उस केस में, वाई से निकालना पड़ेगा जो भी होगा, दैट इज एक्स। And similarly, if the figure is symmetric about y-axis, अगर वो y-axis के about symmetric है, तो आपका जो CG है, that उसका x coordinate will be 0, because you measure the x coordinate from y-axis. ठीक है, तो ये आपने एक्सिस चुना अगर, ठीक है, मैंने ऐसा कुछ एक्सिस चुना, तो फिर ये जो हो जाएगा मेरा x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, एंड यहाँ से फिर आपको सिर्फ y लोकेट करना पड़ेगा। ठीक है, similarly if the figure is having more than one axis of symmetry and it is symmetric about both, then we will have the central and intersection points. This is x. Who is this? Please mute. Hello. 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 So if you have x-axis and y-axis, okay, तो figure is symmetrical about both. That means ये अगर मेरा x हो गया, ये y है, तो in this case x and y both will be at the intersection point, that is here, x and y. Okay. Then centroid may or may not lie on the given figure. It may be or may not be. That depends on the situations. Okay, and we'll see that in the subsequent discussion, that when we solve the numericals. Okay. तो is that clear to you? यहाँ तक ये clear है आपको? Yes. हाँ, नाउ यहाँ तक clear है। नाउ वन थिंग मोर, ये लास्ट वाला पॉइंट अच्छे से याद रखना, कभी ये बहुत रेयर दिखता है बट दिखता है कभी। इफ द एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज इंक्लाइंड अबाउट 45 डिग्रीज, अगर एक्सिस ऑफ सिमेट्री है आपका और ये आपका 45 डिग्री इंक्लाइंड है, मतलब ऐसा कुछ एंगल बना रहा है, तो इन दैट केस ओके, your x coordinate and y coordinate of the centroid will be equal. Okay? X bar and y bar will be equal. Okay, so this all we'll see when we solve the problems. So I hope now only 2 minutes are left. Okay, next will be the where we will going to see the centroid of some standard shapes. Okay, that is some standard cases we are going to discuss. Okay, and that will be needed to solve the problems. If you are going for solving the numerical, that means to find the centroid of composite figures, okay, any composite figures, then we need to remember such standard cases. So you have to remember the centroid of some basic shapes. Okay, some basic shapes like rectangle, circle, triangle, okay, semicircle, okay, quarter circle, then circular arc, okay, and etc. We'll see that. Okay, so we'll see in the next lecture. For today, it is all about. Okay, अभी only 2 minutes are left now. Okay, clear to you? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Please share this PDF. So let me take the attendance and then you may leave. Okay, just wait.
सर Yes. हमारे सिलेबस में CG, CM और सेंट्रॉइड सेम ही होगा सारे केसेस में। हाँ, यस यस, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, यूनिफॉर्म थिकनेस बॉडी और सेम मटेरियल कंसिडर करने वाले हैं ना थ्रू आउट। तो सीजी बोलो सेंट्रोइड बोलो सेम ही हो जाएगा ना। यस ओके सर, थैंक यू। हाँ, ट्राई टू कोरिलेट आवर टुडेज डिस्कशन विथ जो भी आपका सिलेबस में है, और देखो क्या होता है। ठीक है, ठीक है, एंड देन विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। आज जो मैंने डिस्कस किया वो डेफिनेशन उस पर अप्लाई करके देखो, ठीक है, एंड व्हाट यू आर फाइंडिंग देन टेल मी। ओके सर ये पीडीएफ शेयर कर दोगे अभी? ओके सर। एंड ऑफ द लेक्चर जब हो जाएगा ना, तब मैं आपको पीपीटी वगैरह शेयर करूंगा। ठीक है, once the unit will be completed then I will show. Okay, any more doubts? सर अटेंडेंस हो गया। हाँ, अटेंडेंस हो गया। now you may leave if you have no any doubts. So shall I end the meeting?